Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and studying at home very well. Our today's lecture is of Oxford Progressive English level 7. Let's start our lecture. Unit number 5, Danger, Great Expectations. This is the dramatized first chapter of Great Expectations, one of the most famous novels of Charles Dickens. Great Expectations, written by Charles Dickens, published in 1861. It is probably the most dramatic opening of all Charles Dickens novels. Dramatized means that the continuous prose of the original has been turned into or converted into a drama or play. Okay ji, let's start. 10 years old Pip is in the churchyard beside the gravestone of his mother and father. The church is in the Kentish marshes, a bleak stretch of windswept, flat, empty land on the south side of the estuary of the River Thames. Out on the river are the prison hulks, the old dismasted warships which were used as prisons. Pip lives with his much older sister, known to everyone as Mrs. Joe, and her husband, the blacksmith Joe Gargery, in the village a mile away from the churchyard. पिप जो है वो 10 years old है और एक कब्रिस्तान में बैठ के अपने माँ बाप की कब्र पे बैठा हुआ है और उन्हें याद कर रहा है. वो अपनी बहन के साथ उसके घर में रहता है, अपनी बहन और उसके शोहर के साथ उसके घर में रहता है. पिप जेंटली मूविंग हिज हेड ओवर द इंस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेवस्टोन. फिलिप पिरिप उसके वालिद का नाम है. उसके वालिद. आई नेवर इवन सा यू फादर, ऑल आई हैव of you is your name, Philip Pirrip. But Philip Pirrip is so difficult to say. Pip is much easier. Also Georgiana, wife of the above. That's you, mother. I wish I could remember you, but I was too young. Philip Pirrip जो है वो पिप के पेरेंट्स उसके वालिद हैं और गॉर्जियाना जो है वो उसकी वालदा हैं और दोनों मर चुके हैं. अब वो कह रहा है अपनी माँ से कि मुझे सिर्फ़, अपने बाप को कहता है कि मुझे सिर्फ़ आपका नाम याद है, और अपनी माँ से कहता है कि मैं बहुत छोटा था जब आप मुझे छोड़कर चले गए.